A very good evening to one and all present. आज हम एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का which is very important as far as your competitive exams are concerned. तो आज के सेशन में हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ लाइंस ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड आई होप पहले मैं इसका एक क्विक रिव्यू दूंगा आपको एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन एनडीए आईआईटी जेईई और बहुत सारे टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं आपके डिफरेंट स्टेट्स के उनमें ये क्वेश्चंस इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम सारे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स सारे शॉर्टकट्स जितने भी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है we will try to review all these things in this first session then in the upcoming sessions we will come up with the very important and competition point of view से जो बहुत important आपके objective type problems होंगी उनको हम discuss करेंगे तो dear students stay tuned with us for 2 or 3 sessions on this chapter in which we will discuss the basic concepts as well as some very important objective problems. So let me start with the basic review of the topic. So our topic is rectangular coordinates, straight lines and family of lines. इसका पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूं और आज जो हम करेंगे हम रिव्यू करेंगे चैप्टर डिटेल्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे वी विल गिव I'll give a quick review fine a comprehensive review I should say of this chapter fine so in 1667 हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर जिन्हें हम कहते थे रेन डेस्कार्टेस फ्रेंच मैथमेटिशियन and philosopher René Descartes. He published, a book, La Geometric. Fine. So what he has written exactly in this, what he has done in this publication, he has unified algebra and geometry. In this La Geometric, he has unified algebra and geometry. Algebra और geometry दोनों को इसने यूनिफाई किया and he studied the geometrical problems with the help of algebra. और इसीलिए जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इन्हीं के ऑनर में नेम किया गया फाइन द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री is that it uses algebra methods and equations to gain information about the geometric problems. So in the study of coordinate geometry, it is necessary to consider both length and the direction of the line segment. तो ये कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया नाउ वी विल स्टडी पॉइंट बाय पॉइंट एवरीथिंग अबाउट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेट लाइंस एंड द फैमिली ऑफ लाइंस सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर और Cartesian coordinate system. आप लोगों ने क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा ये पार्ट
Fine. What I'm right now just giving you a review. 9th and 10th, both classes you must have studied this. We have this as x-axis, horizontal axis, and this vertical axis is called your y-axis. Fine. The connection between algebra and geometry in coordinate geometry is made up by setting one-to-one correspondence between the points in the plane and ordered pairs of the numbers. Fine. हमारे पास जो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जो कनेक्शन होता है एल्जेब्रा और ज्योमेट्री का कनेक्शन कैसे किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इन्होंने एक वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बनाया बिटवीन द पॉइंट्स इन द प्लेन एंड द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द नंबर्स फॉर एग्जांपल इस प्लेन में मैंने एक पॉइंट P लिया फाइन और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए हैं x, y तो इन कोऑर्डिनेट्स और ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में one to one correspondence जो बना that one to one correspondence this is this is your x-axis this is your y-axis fine ये y-axis है आपके पास तो ये जो distance है आपके पास this distance is your x distance and this distance is your y distance that is a P point has the coordinates x comma y और ये दो mutually perpendicular axes हमारे पास होते हैं x o x dash this is called your x axis ये आप लोग क्लास 9 से ही शुरू कर देते हैं पढ़ना y o y dash this is known as your y axis fine this is mutually perpendicular axis हमारे पास ये हैं फाइन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ये जो ओरिजिन को हम o से डिनोट करते हैं तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है o एक्सिस कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस and similarly OY is the positive direction of y axis fine तो ये जो आपके पास डायरेक्टेड लाइंस हैं डायरेक्टेड लाइंस x dash ox and y dash oy are called coordinate axis are together called coordinate axis एक्चुअली ऐसा बहुत बार आर टुगेदर कॉल्ड बहुत बार ये ऑब्जर्व किया जाता है कि टर्म्स स्टूडेंट्स बोलते हैं टीचर्स से सुनते भी हैं बट दे देमसेल्व्स डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस fine so this combination of your x axis and y axis these are the directed lines and we call these directed lines together as the coordinate axis इन्हें हम क्या बोलते हैं we call them as the coordinate axis यहाँ एक नोट मैं आप लोगों को दूंगा आप लोगों को पता भी होगा so just for your review I'll tell you one thing that एब्सिसा जिसे हम एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं एब्सिसा इज रिटन फर्स्ट पहले एब्सिसा लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर में एंड देन ऑर्डिनेट और उसके बाद आपका ऑर्डिनेट लिखा जाता है फाइन सेकंड इसी में नोट नंबर 2 आप ले सकते हैं x coordinate is positive if measured along OX and negative if measured along O dash OX dash. While ordinate is positive if measured along OY and negative if measured along OY dash. देखिए अगर OX लेते हैं then your x is positive on in the direction of OX. OX की डायरेक्शन में आपका x क्या होता है पॉजिटिव होता है एंड इन OX डैश डायरेक्शन योर x is negative and similarly for y axis also and one of the most important points of your class 10th coordinate geometry if you take any point on x axis any point on x axis अगर आपका x axis पर कोई भी पॉइंट है तो उसका हैज ऑर्डिनेट 0 उसका ऑर्डिनेट जो होगा y कोऑर्डिनेट जो होगा
वो 0 होगा एंड एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस हैज एब्सिसा 0. फाइन. कोई भी पॉइंट अगर आपने x कोऑर्डिनेट पर लिया है, सॉरी y एक्सिस पर लिया है, तो उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा आपका वो 0 होगा. So this was about what are coordinate axes. एब्सिसा हम पहले लिखते हैं हमेशा, दिस इज एब्सिसा. फाइन, एब्सिसा हम पहले लिखेंगे, ऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं. फाइन. देन वी हैव कि ओ एक्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ओ डैश एक्स में अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो नेगेटिव होगा. देन वी हैव अगर हम कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा. अगर हमने कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लिया तो उसका हमारा abscissa 0 होता है. Fine. Now the second topic that I should start here is quadrants. Fine. ये हमारा जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं आपकी कौन कौन सी, x डैश o x and y dash o y. These mutually perpendicular lines both are known as coordinate axes. Find which divides x o y plane in 4 parts. हमारे पास ये जो x o y प्लेन बनता है, इस प्लेन को ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, they divide it in 4 parts and each part is known as your quadrant. Fine. So how do we define quadrants? XOY plane is divided by the mutually perpendicular lines x dash OX and y dash OY in 4 equal parts and each part is known as your quadrant. Each part is called a quadrant. हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं. तो बेसिकली अगर मैं यहाँ क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करूं आपके लिए, क्वाड्रेंट यहाँ बनाऊं, तो आई शुड से दैट वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन वी हैव फोर्थ. ये आप क्लास 9th का पार्ट है जो अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को. एक्स डैश, देन वी हैव वाई, वाई डैश. यहाँ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी होगी, दैट इज इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट both your x and y they are positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके दोनों x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं. नाउ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट वी हैव x नेगेटिव and y positive. In the third quadrant we have both x and y negative. And in the fourth quadrant, we have x positive and y negative. Fine. So this is what you should remember. That in first quadrants, we have x and y both positive. Then in second quadrant, we have x negative, y positive. Then in third quadrant, we have x and y both negative. And in fourth quadrant, we have x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव. इस पे बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आप लोग क्लास 9th में शुरू करते हैं. लाइक इफ आई गिव एग्जांपल दैट टेल द क्वाड्रेंट्स in which following points lie. Let me just say the point is 2, 4, 3, -2, -2, 4, 3, -3, -3. फाइन. आपको क्वाड्रेंट बताना है जहां ये पॉइंट्स आपके लाई करते हैं. देखिए 2, 4 बोथ आर पॉजिटिव, सो दैट मींस इट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये पॉइंट आपका कहां होगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फाइन। तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इट इज देयर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। और दोनों के दोनों एक्स और वाई नेगेटिव आपका कहां होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। सो द आंसर विल कम आउट टू बी थर्ड quadrant. Fine. So in this way, you can find exactly we learned how to define a quadrant, and we can tell that a particular point lies in which quadrant. Fine. Okay. Now let's see the third part that we have now. In the first point, we have taken the initial introduction and about the rectangular, or we can say the Cartesian coordinate system. Then in the second point, we have discussed about the coordinates. Now in the third part, we have the distance formula, a very important and what each and every student loves basically. So in distance formula, we have distance between the points, distance between the points x1, y1 and x2, y2 is, fine, this distance is given by square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Fine, that is how we find the distance between the 2 points. इसी में एक चीज आप एज अ पॉइंट रिमेंबर कर लीजिए. फाइन, डिस्टेंस of a point x1 y1 from origin. अब देखिए, ओरिजिन से अगर पूछ लिया दैट मीन्स 0 0 से डिस्टेंस पूछ लिया, तो 0 0 से डिस्टेंस पूछने का मतलब यहाँ x2 और y2 आपका 0 0 हुआ. सो दैट डिस्टेंस विल कम आउट टू बी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. कि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस आपको ओरिजिन से पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्टली इस वे में लिख सकते हैं. फाइन. नाउ वी should remember some facts about distance formula, some facts regarding distance formula. बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, so we have some very important facts जो हमें याद होने चाहिए so that we can solve the questions using the distance formula. Now what are these important facts? Let me write them one by one. 4 पॉइंट्स, हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 4 पॉइंट्स दे देंगे. 4 पॉइंट्स will form, fine, point A. 4 points will form a parallelogram. 4 पॉइंट्स आपके पैरेललोग्राम कब बनाएंगे? इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर अनइक्वल. इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स are equal but diagonals are unequal. ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी लेकिन उसके अगर डायगोनल्स अनइक्वल आ जाते हैं तो वो आपके पास 4 पॉइंट से मिलकर के हम क्या बनाएंगे? वी विल फॉर्म अ parallelogram. Fine. So this is a very important thing that you should note about the parallelogram. Fine. Next that we have is these 4 points will form a rectangle. 4 points हमारे rectangle कब frame करेंगे? 4 points will form a rectangle if opposite sides are equal and 2 diagonals are also equal. If opposite sides are equal and diagonals are also equal. तो देखिए अब यहां से आप एक चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा
कि अगर हमारे 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, दे विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम और अ रेक्टेंगल। तो दोनों के लिए एक कंडीशन तो सेम है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, बट अगर डायगोनल्स अनइक्वल आ जाते हैं, in that case it is a parallelogram, और diagonals अगर equal आ जाते हैं, in that case it is a rectangle. Fine. Now the third point is 4 points will form a rhombus. 4 पॉइंट्स हमारे rhombus कब फॉर्म करेंगे? If all the 4 sides are equal but diagonals are unequal. If all 4 sides are equal but diagonals are unequal. चारों के चारों हमारे पॉइंट्स तो इक्वल हैं, बट डायगोनल्स हमारे क्या हैं? अनइक्वल हैं. दैट इज द रीजन हम क्या कहेंगे? इट इज अ तो ये हमारे पास कंडीशन है कि कब हमारे 4 पॉइंट्स जो हैं दे विल बी अनइक्वल. फाइन. When we will say sorry 4 points will form a rhombus. rhombus कब फॉर्म करेंगे? अगर उसके चारों साइड्स इक्वल हैं बट डायगोनल्स क्या हैं? अनइक्वल हैं. तो इन दैट केस हमारा जो in that case what will happen, that it is a rhombus. ये हमारे पास क्या होगा? rhombus होगा. So next what we have, एक और हमारे पास कंडीशन ये आएगी कि 4 points will form a square. 4 पॉइंट्स हमारे स्क्वायर कब फॉर्म करेंगे? 4 points will form a square if all 4 sides are equal and diagonals are also equal. Fine. Diagonals are also equal. This is point number 4. Then we have point 5 here, that देखिए अब हमने 4 चीजें देख ली: पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर. तो नेक्स्ट में मैं कह सकता हूं कि 4 पॉइंट्स हमारे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे बट नॉट रेक्टेंगल. फाइन. 4 पॉइंट्स विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल. तो उसमें हमें क्या प्रूव करना होगा? फाइन. व्हाट वी विल प्रूव इन दिस? We will prove that its opposite sides are equal but diagonals are not equal. So what we will prove, that 4 points will form a parallelogram but not rectangle. We will prove that its opposite sides are equal but diagonals are not equal. फाइन. ऐसे ही हम पॉइंट नंबर 6 भी लिख लेंगे, that 4 points will form a rhombus but not a square. Will form a rhombus but not a square. तो यहां हमारे पास क्या कंडीशन होगी? प्रूव दैट all 4 sides are equal but diagonals are unequal. Not equal. Fine. So this is how we can prove. हमने ये
6 अलग अलग कंडीशंस, वैसे तो 4 कंडीशन सफिशिएंट थी, बट स्टिल आप लोग अपने याद रखने के लिए सारे के सारे पार्ट्स लिख सकते हैं। फाइन, यू कैन रिमेंबर देम। अच्छा देखिए, ये हमने लिया 4 पॉइंट्स के लिए। अब अगर हम बात करें फॉर 3 पॉइंट्स, फाइन, 3 पॉइंट्स विल फॉर्म, यहां मैं लिखूं पार्ट सेकेंड, 3 points will form। अब देखिए 3 पॉइंट से हम क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू, अगेन ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं दैट यू शुड रिमेंबर, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो यू शुड रिमेंबर, यू शुड लर्न देम बाय हार्ट। 3 points will form an equilateral triangle। 3 पॉइंट्स आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बनाएंगे? इफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। इफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। अगर तीनों की तीनों साइड्स, हम ये सब डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव करना चाहेंगे। फाइन, वी विल प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकेंड, 3 पॉइंट्स विल फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। Isosceles triangle if any 2 sides are equal। फाइन, अगर कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो जाती हैं, in that case our triangle is isosceles triangle। And the third is 3 points will form a right triangle if sum of square of any 2 sides is equal to square of the third side। Square of third side, then in that case, like ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो in that case we will say that the 3 points will form a right angle triangle। फाइन, इसके बाद एक हमारे पास अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसे हम देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में we will prove it with the help of many, we have the different conditions with the help of which we will prove it। But right now अभी हमने क्योंकि distance formula देखा है, so we will be discussing only about the distance formula to prove it। So 3 points A, B, C are collinear। Fine, 3 points A, B, C are collinear if collinear means they lie on a line। One of the following conditions hold। मैं 3 conditions लिखूंगा। फाइन, क्या कंडीशंस होंगी अगर 3 पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है? डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी, और डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ए बी, और डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस सी बी। यहां आप देखिए, इन कंडीशंस को ऐसे याद रखने की बजाय यू कैन सिंपली रिमेंबर कि 2 डिस्टेंसेस का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, इन दैट केस सम, आई एम सेइंग, इन दैट केस वी विल से दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर कोलिनियरिटी की कंडीशन वहां पूछी जा रही है। फाइन, ओके, सो दिस इज
few facts we have discussed about the distance formula. देखिए सबसे पहले हमने देखा कि distance formula हमारा क्या है, उसके बाद हमने शेयर किया कि ओरिजिन से अगर हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर हमने 4 पॉइंट से कैसे हम पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, इक्विलेट, फिर 3 पॉइंट से इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और 3 पॉइंट्स को हम कैसे कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से, दैट वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट नंबर 5 आता है, इन दिस आई मार्क एज सेक्शन ए एज सेक्शन फॉर्मूला। ये भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्लास 10th में हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इससे। सो व्हाट इज दिस सेक्शन फॉर्मूला? सो आई शुड से द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the join of the points x1 y1 and x2 y2। दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, पॉइंट A with the coordinates x1 y1 and point B with the coordinates x2 y2। Now there is a point C which divides this join of AB in the ratio m1 m2। Fine. This C divides AB in the ratio m1 ratio m2 internally. Fine. Internally means this point C lies between A and B. Then the coordinates of C, it is given by m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, and y coordinate is given by m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Fine. This is for internal division। जब आपका पॉइंट C A और B के बीच में कहीं लाई करेगा, इन दैट केस। फाइन। इसी में सेकेंड केस हमारे पास क्या होगा, दैट इज फॉर एक्सटर्नल, आई शुड से। फाइन, एक्सटर्नल डिवीजन, या आप सेकेंड रहने दीजिए इसको, तो इसी के साथ ले लीजिए, सेकेंड में हम दूसरा पार्ट डिस्कस कर लेंगे। ये इंटरनल डिवीजन था। फाइन, अगर आपका एक्सटर्नली हो, फाइन, इन द रेशियो m1 रेशियो m2, तो एक्सटर्नली का मतलब यहां पर क्या हुआ, कुछ इस टाइप से हुआ कि ये आपके पास A है, ये पॉइंट आपके पास B है, and C lies somewhere here and it divides it in the ratio m1 ratio m2। That means this complete is m1 and this is m2। So in that case, how we write the coordinates of the point C? C के coordinates हम कैसे लिखेंगे? To C in that case, it is given by m1 x2 minus m2 x1 upon m1 minus m2। Fine. Y m1 y2 minus m2 y1 upon m1 minus m2। That is how do we get the coordinates of the point C in case of external division। जब आपके पास external division है, उस केस में आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव साइन आ जाता है। फाइन, सो दिस इज अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला। इसी सेक्शन फॉर्मूला से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या है यहाँ पर कि A पॉइंट है आपके पास विद द कोऑर्डिनेट्स x1 y1, और B पॉइंट है आपके पास विद द कोऑर्डिनेट x2 y2,
सी जो पॉइंट है आपका वो मिड पॉइंट है, सी इज द मिड पॉइंट, तो ये रेशियो 1 हो जाएगा। तो इन दैट केस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज गिवन बाय x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास होता है कि अगर सी जो है वो आपका क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। इन दैट केस हाउ वी राइट द मिड पॉइंट फॉर्मूला। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास अब देखिए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। क्लास जो जूनियर क्लासेस हैं वो जब रिव्यू होती हैं तो इट बेसिकली शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिडिल क्लासेस, दैट हाउ मच दे आर इंपॉर्टेंट। अब इस केस में आपसे पूछ लिया जाता है कि इफ देयर इज अ ट्राइंगल विद द कोऑर्डिनेट्स, ट्राइंगल है आपके पास with A as x1 y1, B x2 y2 or C x3 y3. Then coordinates of centroid, आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फाइन। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपको okay, let's come back due to some technical issues. Okay, now see, last point जो मैं before I left the meeting, it was हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3. Then the coordinates of the centroid, they are given by x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3. ये आपके पास क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। इसी में हम बात करें फिर कि अगर आपके पास ट्रायंगल है विद द सेम कोऑर्डिनेट्स, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर, फाइन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे, फाइन, इस केस में हमारे पास क्या होगा? वी हैव अ ट्रायंगल, देखिए एक मिनट में लिख लूं पहले, triangle with the coordinates A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3. Fine. Okay, let's see once again. ट्रायंगल है आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास A पॉइंट विद x1 y1, B पॉइंट x2 y2 and C x3 y3, and whose sides are A B C. ये आपके पास है A side, B side and D side. This is the length of the sides, right? A, B and C. ये आपको given होगा. In that case, the coordinates of in center, they are given by ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, and y coordinate is given by ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c. That is how we will get the coordinates of the in center. हमें in center के coordinates मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? इसी में मैं पॉइंट नंबर 5 लिख दूं आपके लिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल।
ठीक है, हमने सेंट्रॉइड की बात करी, फिर हमने इन सेंटर की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं एक्स सेंटर की। फाइन। तो यहां इसी केस में देखिए कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी के x2 y2 और सी x3 y3। आपका जो BC है, इट हैज अ डिस्टेंस a, लेंथ a, और जो CA है उसकी लेंथ है आपकी B, और जो AB है उसकी लेंथ है आपकी C। फाइन। Now the circle which touches BC and the two sides AB and AC produced is called x-scribed circle opposite to angle A. Fine. The bisectors of the external angles B and C meet at a point I1, which is the center of the x-scribed circle opposite to angle A. Fine. Let me write it for you so that you can later on you can correlate and you can draw the circle. Fine. How do we define basically this x center? So the circle which touches BC, वो सर्कल जो BC को टच करेगा, एंड द टू साइड्स, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं टू ड्रॉ दिस सर्कल, AB and AC produced is called, देखिए यहां हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग एक्स सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। सो द सर्कल विच टचेस द साइड BC, जो BC साइड को टच करेगा, फाइन, द सर्कल विच टचेस द साइड BC and two sides AB and AC produced is called x-scribed circle opposite to angle A, opposite to angle A, and the bisectors of the external, okay, I hope you can see my screen. Bisectors of the external angles B and C meet at a point I1, which is called center of the x-scribed circle, which is center of the x-scribed circle opposite to angle A. Fine. Now the I1 is given by this definition is regarding this x center of the triangle. Now the coordinates of this I1, they are given by negative AX1 plus BX2 plus CX3 upon minus A plus B plus C, and y coordinate is also negative AY1 plus BY2 plus CY3 upon negative A plus B plus C. फाइन। अब देखिए ये हमने किसके ऑपोजिट ड्रॉ किया,
ऑपोजिट टू एंगल ए, ऐसे ही अगर ऑपोजिट टू एंगल बी ड्रॉ करोगे आप, तो उस केस में आपके I2 के सेंटर्स क्या होंगे? ए पॉजिटिव होगा, ax1 नेगेटिव bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c, ay1 नेगेटिव by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस सॉरी a माइनस b। ये आपने देखिए हमने x2 देखा, सॉरी I2 के कोऑर्डिनेट्स लिखे विच इज यू नो EXCENTRE we have drawn with opposite to angle B. Similarly, you can write the coordinates of I3 also. I3 क्या होगा? Opposite to the angle C जो आप EXCENTRE बनाएंगे, एक्सट्राइट सर्कल बनाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 अपॉन A प्लस B माइनस C एंड ay1 plus by2 minus cy3 upon a plus b minus c। तो इस वे में आप जो एक्स सेंटर्स हैं उसके ट्राइंगल, उसके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं। फाइन। नाउ फाइनली आई विल जस्ट गिव यू अ three very special points and then I'll close my session here only because due to some technical issues there might be some breaks in this session. So if there will be any problem, you can write it in the chat box. We will discuss it again in the next session. Fine. So let A, B, C be any triangle. A, B, C हमारे पास कोई भी triangle है. Now, if the length of the perpendicular of the perpendicular from I, fine, upon the three sides of the triangle are equal, upon the three sides of the triangle are equal, then I is in center. I is in center of the triangle ABC। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने के लिए आपको काम आएगा भाई कहीं भी कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है एबीसी और आई पॉइंट से मैं लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालूंगा तीनों साइड्स पे, वो तीनों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर इक्वल आ जाते हैं, इन दैट केस आई विल से आई इज द इंसेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सिमिलरली ऑर्थोसेंटर of right angle triangle ABC, of right angled triangle ABC with right angle at A, right angle at A is the point A only। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल्ड है ए पर, तो उसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा? पॉइंट ए ही उसका ऑर्थो सेंटर होगा। फाइन। थर्ड आपको जो यहां याद रखना है कि अगर आपके पास ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, then O is the circumcenter, then O is the circumcenter of triangle ABC। उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? सर्कमसेंटर हो जाएगा ट्राइंगल एबीसी का।
तो पॉइंट नंबर 4, अगेन ये बात भी आप लोगों को मालूम होती है, बट स्टिल आई एम राइटिंग फॉर यू दैट सेंट्रॉइड जी of triangle ABC divides the median AD और BE और CF। फाइन, आप ट्राइंगल बना सकते हैं। वहां मीडियंस का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। इन द रेशियो 2:1। तो ये जो सेंट्रॉइड आपका है, ये मीडियंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है? इन द रेशियो 2:1। 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। फाइन। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड वेरी बेसिक पॉइंट्स। फाइन, इसमें अभी मेरे पास दो पॉइंट्स और रह गए। आई थिंक आई शुड डिस्कस दैट आल्सो, देन वी विल स्टार्ट विद लाइंस इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम स्ट्रेट लाइंस से शुरू करेंगे। सो आई मस्ट राइट दोस 2 पॉइंट्स आल्सो। पॉइंट नंबर 6, area of triangle ABC with vertices x1 y1 x2 y2 and x3 y3। ये 3 पॉइंट्स हैं। इन तीनों से जो हम ट्राइंगल बनाएंगे उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय प्लस माइनस हाफ and then this x1 y1 x2 y2 x3 y3 and then again you will write x1 y1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और फिर सॉल्व करेंगे like this। if you people remembered this, you must have done in your class 10th। या तो इसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए, अदरवाइज आप प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि एरिया हमेशा आपने पॉजिटिव लेना होता है। फाइन, तो यहाँ हाफ लगा के यू कैन टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या मिलेगा आपको? x1 y2 माइनस x2 y1। फाइन, फर्स्ट पार्ट आपको ये मिला, प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 minus x1 y3। We'll take the absolute value of this and we'll find the area of the triangle. Now, point number 7 you can write from here only that 3 points। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोलिनियरिटी की कंडीशन हम कई तरीके से प्रूव करेंगे। तो 3 points A, B, C आर कोलिनियर, और बेस्ट वे ये एरिया वाला ही है आपका आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0। फाइन, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है? अगर 0 हो जाता है, इन दैट केस वी विल से दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। फाइन, सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड। इसी में फिर आप एक और बात देख लीजिए कि अगर कहीं आपको एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड करने के लिए आ जाता है, कोई पॉलीगन दे देंगे, उसका एरिया फाइंड करने को बोलेंगे, तो उस पॉलीगन को आप ट्राइंगल्स में चेंज कर लेंगे। फाइन, जैसे आपके पास ये आ गया। फाइन, दिस इज द शेप दैट दे विल गिव। आई होप इट इज अ पेंटागन, 5 साइड्स हमने ली हैं। तो यहां से आप ट्राइंगल्स बना लीजिए। ट्राइंगल्स बना के वर्टिसेस सारे वो देंगे आपको। नाउ यू कैन फाइंड द एरिया, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स, और उसके बाद ऐड अप करके यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन। आप पॉलीगन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज द बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट हमने डिस्कस किया, जहां
we have started with rectangular Cartesian coordinates. Rectangular Cartesian coordinates से हमने शुरू किया. Then we studied quadrants. Then we studied distance formula. Distance formula की अलग-अलग applications देखी हमने. फिर हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा. सेक्शन फॉर्मूला के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट से जहां हमने सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थोसेंटर इन सब के बारे में बात की. एंड एट लास्ट वी हैव डिस्कस्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो ये आज के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं. गो थ्रू देम थॉरली. वी विल डिस्कस स्ट्रेट लाइंस एंड द डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस in the next session. Thank you very much. Thank you.